So the hidden bug theory, I'll give you about the hidden bug theory. Uh, I got suspicious after the 4th of July. Badal from Maharashtra Cyber met me in Ghatkopar. So he told me that your phone is synced and something like that is there. So I checked online, I googled it, what it is. So they have to pass around me and they have to sync the phone. So I kept the phone inside. So surveillance is downstairs. Our bungalow surveillance is downstairs, two in the parking, one in the door. So upstairs there is no surveillance. But when I am going down, even if I go downstairs, I see suspects near my window. The same thing. So I got suspicious about the hidden bugs, and I used to keep the phone inside. When I came to know about that sync thing, when that cyber Maharashtra cyber guy told me. So what I did, I saw that same suspects around me. That means they were watching me from the hidden bugs when I'm coming out, when I'm going anywhere. So I got suspicious itself in 2020 in Palau also. While I was living in GID, there also I got suspicious. And when I came back, not back. What the fuck am I saying? Huh. So when I bought that detector first, so I detected there are bugs in my house. Then in front of those bugs, I started abusing the minister. First, I did the confirmation in 2022. I'm speaking. I'm talking about 2022. तो वो मिनिस्टर जो है ना, तो ये लोग वो भी फैलाते रहेंगे। तो जो फैला रहे ना उसके स्कैमर को वो मिनिस्टर बुला के लिया रहेगा और बोला रहेगा कि भेंचोद वो सटकेला उसको समझ में आया है कि वो घर में हिडन बग है और वो मिनिस्टर को ही गाली दे रहा है और उसके कार्यकर्ता वो सब फैला रहे, तो उनकी वो बैंड बजाया रहेगा वो। फिर उसके बाद इसे आई केम बैक फ्रॉम अ राइड वन डे, आउटडोर ही जाके आया था मैं। सो इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, तो दे हैव टू पास अराउंड मी विथ अ फोन एंड द सर्विलेंस इज कैप्चरिंग देम दैट दे आर विद द क्लोन फोन। तो एक बुड्ढी है ना वायदा कि दूसरी बुड्ढी को पूछे कब तक करने का रहे ये। तो अभी मैं वो सुन रहा है, मेरे सामने हो रहा है वो। मैं बोला ये अभी वो फोन है ना उनको छाती में लेके मरने गया अभी जिंदगी भर। तो सर्विलेंस आर दे, राइट। वो खुद की पब्लिक की भी बजाता है अच्छी तरीके से।